In this session, we are going to have three eminent speakers share their thoughts about the situation of agroecological farming in India, the problems, status, potential, or their experiences. We would have this format that first each one of them would come here and speak for about 10 minutes, sharing their thoughts on these issues that we have identified. And thereafter, we would have uh, certain questions and would like to have their views on those questions. And if you have any questions to ask these eminent speakers, please write your questions and hand it over to the stage, and then we would things. So first I would like to invite Tyagi ji to come and speak for 10 minutes. वो अपने अनुभव उनकी नजर में देश की जैविक खेती या पर्यावरण अनुकूल खेती के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या संभावनाएं हैं, या और किन्हीं बिंदु जिनको वो चिन्हित करना चाहते हैं, कृपया 10 मिनट के अंदर आके वो रखिए। त्यागी जी। आज इस किसान सम्मेलन में मैं हृदय से आशा परिवार का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और पूरे देश से, सभी राज्यों से लगभग किसानों ने अपना प्रतिनिधित्व किया है, उनका भी हृदय से सम्मान करता हूं। आज का जो विषय है ये देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ा ज्वलंत विषय है और हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जब आज़ादी के बाद हम केवल एक या चिन्हित कुछ परिस्थितियों से गुजरे थे जिसमें खास तौर से खाद्यान्न की कमी थी या हमारे पास कोई तंत्र नहीं था, वितरण प्रणाली कमजोर थी। लेकिन आज के दृश्य में देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की एक अच्छी पहचान है। हमारे पास एक पूरे देश में कृषि का एक बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा देश है, उसमें बहुत अच्छी विविधता है, कर्मयोगी किसान हैं, वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान और राजनीति से जुड़े हुए सभी लोग हैं। इन सभी लोगों को एक साथ चिंतन करने का यह मंच आज मैंने देखा है, इसलिए मैं आज इस सभा में उपस्थित सभी को फिर पुनः हृदय से साधुवाद करता हूँ। विषय की गंभीरता को देखते हुए पहले एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब दुनिया बदलती है, परिवेश बदलते हैं, तो उसके पीछे मानसिक पृष्ठभूमि का बदलना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे मन नहीं बदलते हैं और हम कार्यक्रम बदलते रहते हैं तो बहुत छोटी गति रहती है। आज हम सभी को सौभाग्य मिला है कि हमने उन तपस्वियों को एक साथ एक मंच पर याद किया है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए, देश की संकल्पना को एक सही दिशा देने के लिए ये किसान सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन हुआ। मेरा एक निवेदन है कि मैं मंच से अनुमति चाहूँगा कि आज सभी अपने स्थान पर खड़े होकर 1 मिनट के लिए मौन सांत्वना इन तपस्वियों को जरूर दें, जिनकी पृष्ठभूमि के आधार पर हम लोगों को बल मिला और हम लोग आगे बढ़े। तो मैं सभी से पुनः निवेदन करूँगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाए और 1 मिनट के लिए मौन सांत्वना, वो संदेश हम इस धरती को दें, हम अपने अंदर एक संकल्पना को उदय करें कि एक नए इतिहास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्य यातु देवताम
धर्मं सफलताम यातु नित्य यातु शुभोदयम। संकल्पना के साथ हम सभी अपने मन में विचार धारण करते हैं कि नए भारत की तस्वीर को लेकर, जहाँ प्राकृतिक संतुलन, जहाँ अर्थव्यवस्था, जहाँ पर मनुष्य के स्वास्थ्य और किसानों की आमदनी पर गहन चिंतन और मंथन के लिए हम उपस्थित हुए हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तन मन धन से इस धरा को पवित्र बनाएंगे, ऐसी संकल्पना के साथ हो सके। साथियों, मैं 3 विषय पर आपके सामने बात रखूंगा। समय आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी ने, हम उनको अपनी दृष्टि में एक तपस्वी वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं, और आपके निर्देशन में जब बात करते हैं तो बड़ी प्रेरणा मिलती है कि इस देश में 3 दृष्टि से हम लोगों ने काम किया है, और इस देश की पृष्ठभूमि है। ये तात्विक दृष्टि से भी इस देश के लोग कुछ सारी चीज़ों को देखते हैं, फिर वैज्ञानिक तर्क दृष्टि से उन चीज़ों को देखता है, फिर प्रयोगकार लोग उसको व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं। तो तात्विक, तार्किक और व्यवहारिक तीनों दृष्टियों का प्रयोग करते हुए हम इस सम्मेलन को अभियान का रूप देंगे, ऐसे अपने मन में विचार हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो इस समय एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन करते हुए कैसे भारत एक कृषि आधारित नए इतिहास को लिखता है। इसमें जैविक खेती की एक पृष्ठभूमि बनती है, और सभी तपस्वियों ने मिलकर लंबे समय से काम किया है। भारत में उसके अनेक नाम हैं। सजीव खेती, सेंद्रीय खेती, शैतकारी खेती, बायोडायनेमिक, जैविक खेती, अग्निहोत्रा, अनेक विधाओं से इस देश में बहुत सारे प्रयोगकार लोगों ने काम किए। सबसे हम लोगों को प्रेरणा मिली, एक एक कदम आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जब हम कृतज्ञता भूल जाते हैं तो हम परस्परता में एक दूसरे के व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर पाते, और वहां अपने यश को बढ़ाने में लगते हैं, और वो यश तो बढ़ता नहीं, अपयश में चला जाता है। मैं इस सभागार में उपस्थित सभी सात्विक मनीषियों से, मैं मनीषी शब्द इस्तेमाल करूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी समाज कभी भी विरोध की प्रवृत्ति से आगे नहीं बढ़ता है। हमेशा संवाद की जगह हम लोग सही चीजों का निर्णय लेते हैं। प्रकृति की व्यवस्था एक है, हवा, पानी, पर्यावरण एक है, मिट्टी में उपजाऊ क्षमता एक है, उपजने के लिए फसलों का डिजाइन एक है। हम कितनी चीजों को देखें तो व्यवस्था का स्वरूप एक है। फिर प्राकृतिक और जैविक खेती में विरोध क्यों, ये चिंतन का विषय है। मंच से आवाज उठनी चाहिए, ये विरोध का विषय है ही नहीं। मनुष्य को प्रकृति की व्यवस्था को समझना है। सूर्य पूर्व से निकलता है, इस पर क्या तर्क करेंगे। धरती से वनस्पतियां पैदा होती हैं, धरती में उर्वरता का नियम है। वो नियम किस प्रकार से अपने आप में पुष्ट होता है, उस पुष्ट परंपरा में किस प्रकार से बीज फलित होता है, और बीज गुणात्मक रूप में कैसे उत्पादन देकर एक दाने से 1000 दाने पैदा करता है। फिर सवाल यही उठता है कि एक दाने से 1000 दाने पैदा करने वाला किसान आर्थिक रूप से कमजोर क्यों। इसके लिए एक नया इतिहास हमको, जो इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी का भी लिखना होगा। मैं अपने दोनों मॉडरेटर से निवेदन करूंगा, ये चीजें अब राज्य के लिए एक चिंतन का विषय है, संवाद के विषय हैं कि हम अर्थशास्त्र के मायने भी बदलने चाहिए। जो अर्थशास्त्र है ये कृषि का अर्थशास्त्र नहीं है। इसमें 1 किलो अनाज से प्रोसेसिंग उत्पाद बनाकर बेचने वाला अरबपति हो जाता है, और 1 किलो गेहूं को जमीन में डालने वाला जो 100 किलो पैदा करता है वो कर्जदार हो जाता है। ये कौन सा अर्थशास्त्र है, ये हमारी समझ में नहीं आया। ये मंच से आवाज उठनी चाहिए। किसानों की गरीबी का कारण आर्थिक असंतुलन है। हमने लागत की सारी चीजें बाजार से खरीदी,
हम अपने सामान को बाजार में बेचने गए, कीमत भी बाजार ने लगाई, हम लागत खरीदते समय भी बाजार के पराधीन थे, हम अपने सामान को बेचने में भी बाजार के पराधीन थे। प्रोसेसिंग का काम किसानों ने नहीं किया, मूल्य संवर्धन का काम किसानों ने नहीं किया, उपभोक्ता को किसानों ने नहीं बेचा। एमएसपी का मानक मिनिमम क्यों और एमआरपी का मानक मैक्सिमम क्यों, इस पर इस देश में चर्चा नहीं होती। आप विचार तो करो कि उत्पादक को कम से कम दिया जाए और उपभोक्ता से ज्यादा लिया जाए, ये बीच वाला कौन है? क्यों नहीं देश में इसकी तस्वीर बदली जाती? हम किसी व्यापार व्यवस्था का विरोध नहीं करते, हम किसी तंत्र का विरोध नहीं करते, हम संतुलन की बात करते हैं। हम ज्ञानी को भी उतना ही सम्मान देते हैं, हम विज्ञानी को भी उतना ही सम्मान देते हैं और प्रयोगकार को भी उतना ही सम्मान देते हैं। ये सम्मान देने की परंपरा इस देश की है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि भारत सरकार के द्वारा इस समय गजट कमेटी में कुछ ज्वलंत मुद्दे रखे गए हैं कि प्राकृतिक खेती की परिभाषा, उसका कंटेंट और उसका कैरिकुलम किस तरीके से बनाया जाए ताकि अनुसंधान, शोध, शिक्षा और नीति पर गहरी चर्चा के साथ एक सही निर्णय पूर्वक हम देश में आगे बढ़ सके। ये काम यहाँ इस मंच के द्वारा भारत सरकार को लिखा जाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है आपको। क्योंकि मुद्दा छोटा नहीं है, हमारे प्रयोगकार किसान प्रयोग कर भी लेंगे, सफल भी होंगे, लेकिन उस सफल का कब साइंटिफिक वैलिडेशन होगा, कब वो नीति में जाएंगे, कब उस पर बजट बनेंगे, कब उस पर कार्य योजना होंगी, कब वो चलेंगे, एक समय निकल जाएगा। इसके लिए इस मंच का एक निष्कर्ष जाना चाहिए भारत सरकार को कि प्राकृतिक खेती प्रकृति की व्यवस्था को समझकर होगी, इसलिए अनुसंधान प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, नीतियां प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार और शिक्षा प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, ताकि इस देश का किसान, इस देश के नौजवान कृषि पर गौरव कर सकें। ये भारत की जरूरत है। दूसरा मेरा निवेदन आपसे ये है कि जिस प्रकार से आज हम मोनोक्रॉपिंग पैटर्न में फंसे हैं, एकल फसल प्रणाली के कारण इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि जहां पर बायोडायवर्सिटी अनेक चीज पैदा हो सकती थी, वहां पर भी हम मोनोक्रॉपिंग ही करते हैं। और मोनोक्रॉपिंग में हम कहीं से सही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर हम इनपुट को तलाशते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, दुनिया भर के साइड, और अंत में मनुष्य का साइड होने का नंबर आ गया। इस दुर्दशा से बचने का एक ही तरीका है कि हम एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन को पॉलिसी में लेकर आए कि इस देश में यदि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर के हर सवाल का उत्तर खोजना है तो उसका उत्तर देने की सामर्थ्य एकदम केवल एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन है। यदि डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर में किसान अपने खेत में अनेक फसल लगाता है तो ना उसको क्लाइमेट की प्रॉब्लम है, ना उसको कोई इनपुट की प्रॉब्लम है, उसके क्लस्टर अप्रोच में प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और अनेक फसलों के लगाए जाने के आधार पर खेती परिवार के हिस्से से जुड़कर समाज का रास्ता खोलती है। ये सिविल सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने अपनी याद में पहली बार एक सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को देखा है। मैं दोबारा दोहराता हूं इस बात को, आज 40 वर्ष से हम लोग इस देश में इस तरीके के आयोजन देख रहे हैं। मैं कविता जी को, कपिल भाई जी को इस बात का साधुवाद देता हूं और इस सम्मेलन में आए हुए सारे लोगों को कि आप गौर करिए कि आप उस महासभा के अंदर बैठे हैं जहां किसी सभा ने अपनी नागरिकता में सभ्यता का परिचय दिया है, खाते समय सभ्यता का परिचय दिया है, बैठते समय सभ्यता का परिचय दिया है, सभा में रहते भी सभ्यता का परिचय दिया है। इसलिए हमें इस सभ्य समाज के द्वारा एक आवाज उठनी चाहिए ताकि हम गजट कमेटी को एक सही संदेश दे सकें कि डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर में एक बिल्कुल प्रोजेक्टिव प्लान के द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय नीति हो और राज्य स्तरीय कार्य योजना हो। इसमें डॉक्टर साहब एक बड़ा गहरा मुद्दा है कि जब हम एमएसपी पर चोट करते हैं उस समय मुद्दा ये आता है कि कहीं हमारा प्रोडक्शन डिसबैलेंस ना हो जाए। तब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार उत्पादन की नीति और उत्पादन संतुलन के लिए एक समन्वित कृषि कार्य योजना राज्य स्तर पर बनाए
ताकि उस राज्य में क्या चीजें पैदा हो सकती हैं, किन चीजों की वहां खपत होगी और किन चीजें वहां से बाहर ले जाई जा सकती हैं, इस आधार पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के लिए खड़ा हो सकता है। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है आपके सामने। नहीं तो बराबर डॉलर के अनुपात में जो रुपए की कीमत गिर रही है, उसको उभारने का एक ही तंत्र है, उस तंत्र का नाम है कृषि। और कृषि को उभारने का आधार है कि हमने यदि किसान के मनोबल को सम्मानजनक तरीके से बढ़ाया, वो पॉलिसी का हिस्सा बना, तो इस देश में वो दिन दूर नहीं है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो निवेश की बात करते हैं और जो निर्यात की बात करते हैं, जहां पर एक अच्छी इकोनॉमी की बात करते हैं, वो सफल होंगे। ये गहरा मुद्दा है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन को जोड़ा जाए। 1 मिनट और लूंगा बस। तीसरा मुद्दा मैं आपसे बताना चाहूंगा, एमएसपी का मुद्दा भी बड़ा गंभीर है और हम लोगों ने भारत सरकार से खुद हम लोगों ने लिख कर चिट्ठी में मेरे पास में 1987 की जो इकोनॉमिकल रिपोर्ट थी मेरी अपनी खेती की, वो इतनी गंभीर थी कि मुझे रात को नींद नहीं आई थी, कई रात नहीं सोया था। वो तकलीफ मेरी नहीं थी, पूरे देश के किसान की थी। जुताई के लिए ट्रैक्टर बाजार से लिया, डीजल बाजार से, पुर्जा बाजार से, मरम्मत बाजार से, जुताई बाजार के कब्जे में चली गई। पानी के लिए इंजन, पंप सेट, डीजल, मरम्मत, पुर्जा सब बाजार से, बाजार के कब्जे में चली गई। खाद बाजार से, बीज बाजार से, दवाई बाजार से। खेती किसने की? बाजार ने की। ये पहला। उत्पादन बाजार में बेचने गया, कीमत बाजार ने लगाई, प्रोसेसिंग बाजार ने किया। वो मैंने आपसे चर्चा पहले भी की। तब मुझे पता लगा इसमें किसान तो कहीं है ही नहीं। ये आधुनिक खेती नहीं है, ये खेती का बाजारीकरण है। हमने समाज को, हमने अपने आपे को, अब हम अपने संबंधों को, अपनी व्यवस्था को नहीं देखते हैं, हम केवल पैसे को देखते हैं। मेरा इस सभा से निवेदन है कि जिस दिन हम पैसे का मूल्य कम कर देंगे और संबंधों का मूल्य बढ़ा देंगे, उस दिन देश में स्वराज्य आ जाएगा। स्वराज्य की परिभाषा है जहां संबंधों की साथ पैसे की संकल्पना होती है। इसीलिए लाभ से समृद्धि की ओर बढ़े। प्रकृति में लाभ का गणित नहीं है, वहां कम और ज्यादा नहीं होता, वहां एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं। वहां गाय घास खाती है तो दूध देती है। वो गुणात्मक परिवर्तन है, उसका कोई मिसाल नहीं है, कोई मशीन नहीं कर सकती ये काम। वहां पर हम अपनी इकोनॉमी को देखें। मुझे आज इस सभा में अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं आप सभी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूं और मैं चाहूंगा कि एक लिखित दस्तावेज, इस स्वराज्य सम्मेलन का एक लिखित दस्तावेज भारत सरकार को सौंपा जाए, जिसमें एमएसपी संतुलन की बात, एमएसपी कानून की बात, एमएसपी को प्रभावी बनाए जाने की बात, विविधता में खेती को क्या स्वरूप दिया जाए इसकी योजना, और प्राकृतिक खेती को एक परिभाषा, एक कंटेंट, एक कैरिकुलम और पूरी राज्य व्यवस्था के साथ कार्यक्रम के रूप में कैसे चलाया जाए, इस रीति नीति का एक लिखित दस्तावेज यहां से जाना चाहिए। ये मेरी सभी को शुभकामना है। सभी को नमस्कार। Thank you, Bharat Bhushanji. Sabarmatee, vanakkam, eppadi irukeenga? That's how normally my conversation with Sabarmatee starts. Before that, I just wanted to inform you all that there will be the translation that's going on in the set frequencies. The frequencies are also available on the door written there. Translations Kannada, Tamil, மற்ற லாங்குவேஜஸ்லையும் நடந்துட்டு இருக்கு. அதை நீங்கள் அந்த சொன்ன FM ரேடியோ வழியாக கேட்டுக்கொள்ளலாம். The translations will be available. So going back, so though Sabarmatee comes from Odisha, since she had spent some time in Chennai, always we start with our greetings in Tamil. Sabarmatee always has a very special space in our heart for the various work that she has been doing for so many years. Along with her father, she was also awarded Padma Shri. She is committed to conserve the environment and is also about conserving a lot of paddy seeds. The paddy conservation is very noted worldwide and it's a matter of pride for all of us. She, along with her father, was also involved in converting a barren land to fertile land, of course, using organic farming practices. That's the specialty through which a small piece of land was transformed into a big forest that housed hundreds of species of plants, and there were also that is also where they
conserve 500 varieties of rice. So she's about diversity, she's about our ecology, she's about a lot of matter of pride for us. I invite Sabarmatee ji to come here and share, but in 10 minutes, all your great achievements. Thank you. यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जो भूमिपुत्र भूमि कन्या हम लोगों को खाना खिलाते हैं, सबको मैं नमन करती हूँ, और सब जितना भी साथी लोग हैं सबको नमन करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसके लिए हम तरसते हैं, वेट करते हैं साल भर, तो कि कब होगा इस टाइप का प्रोग्राम, सब मिलेंगे एक साथ, कंट्री का, देश का अलग अलग जगह से लोग आएंगे, सब एक जब मिलते हैं ना, एक अलग I won't be visible this next time. Yeah, thank you. So we wait for the whole year to attend this kind of program. This time we waited longer because of the corona, because of the pandemic. Many of us have lost our relatives. Many of us have lost our friends, family members. So after all these painful years, we are meeting. So it's a big, huge celebration, I can say, and I'm very happy time to meet all of you. मुझे पता नहीं मैं आप लोगों को बोलूं क्या, क्योंकि इधर जितने भी लोग हैं, इतना काम किया सब लोगों ने, तो किसी को कुछ बोलने का है ही नहीं, ऐसे लग रहा है सबसे सीखने का है. एवरीबडी हैज़ डन सो मच ऑफ वर्क, वी ऑल ऑफ अस हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस इज ए प्लेटफॉर्म वी आर गेटिंग. And so this is a matter of pride that so many people are here learning from each other. I don't think that it happens anywhere else, this kind of gathering and learning process. And we are all common people, and very few scientists might be there, but many of us have not studied agriculture science or any other allied sciences, but still contributing so much to farming, which we generally don't see in this kind of gatherings in academic world. So this is a very, very unique thing. Coming to the agroecological practices, there are many names. I have a request to all of you. You may call it biodynamic, you may call it homo farming, you may call it regenerative agriculture, conservation agriculture, all these names you may give, but ultimately what we are trying to do, we are trying to conserve our nature, protect our planet, and protect people and everybody else, beyond our human beings. Like all creatures, all living and non-living beings, we are trying to protect them so that we can hand it over the resources to our next generation, whatever may be the name. So again, there is nothing called the best method in our agroecological practices. So this is a kind of umbrella concept. Many practices are there. Like one mother has many children who are different from each other in maybe appearance, maybe quality, talents. So all these practices are different from each other, but always try to achieve the same thing. I have a request to all of you, like please do not get divided saying that I am doing this kind of method, so I am different from you, I'm superior one. Nothing like that. Ultimately, we are trying to produce food. Ultimately, we are trying to conserve agriculture. This is what I want to say. Fortunately, after many years of work of all of you, government has started slowly, very slowly, accepting organic farming and natural farming through various schemes, which is not enough at all in comparison to promotion of chemical farming. So there is another group of people here, and also they are spread all over the country,
contributing in their own ways. They are trying to do the small farmers, big farmers, medium kind of farmers, terrace farmers, forest farmers, tribal farmers, non-tribal farmers, farmers from coastal area. Many different types of farmers are there from different agroecological conditions. So we accept, we adopt, and we also adapt many different practices which are very much contextual to our own situation. If something is working in lowland area, it may not work very well in the highland area. So there is no single practice to appreciate. And I request all of you to exchange our knowledge, particularly during these 3 days and beyond this. Government policies are such till now. Again, coming back to the government policies, many people ask that despite all your efforts, why organic farming is not getting popularized? Who will advertise for cow dung? Who will advertise for earthworms? Who will advertise for indigenous varieties? Who will advertise for small farmers? No one. It's except us. No one else will do that. Who will advertise for all the small farmers who cannot speak, women farmers who cannot speak English, come to the national forums and then put their cases in front of us. So it is us we have to advocate for ourselves, and it is very important that we have to convey the message that minimum external output should be used. It's not just one kind of input is the best. I'm coming again and again to this point. And government policies need to be set to support the small farmers and ecological farmers, whatever may be the name. So whatever allocation is there now, it is not enough, and a lot more need to be done. And it also has to be region specific and not necessarily crop specific. Just giving subsidy, I'll tell you few examples which I like to give again and again. The policies are such that they can give subsidy for a tractor, not for your bullocks and bullock cart. They will give subsidy for your chemical fertilizer, not for your compost or vermicompost or liquid manure or jivamrut or whatever it is. They will give subsidy for yielding hybrid varieties, not for the indigenous varieties. So there is a lot of imbalance. They are mismatched there. And another interesting thing, we are compelled to certify our products as organic products. But the people who are growing inorganically, using a lot of agrochemicals, they don't have to certify. They don't have to tell you that this particular chemical is used in brinjal or say apple or grape, which causes cancer or paralysis or which is neurotoxin or may cause genetic problems even in the next generation. So they just go scot-free, and you are compelled to produce a certificate to say that you are growing organically. So this kind of certification process, I'm really sorry to say that it's not helping many organic farmers. We have not certified, even though we are practicing for more than 34 years. It's because of that, like when you have vegetarian mark on a product, you also get non-vegetarian mark. Like when you buy a cake from a market, you get, like vegetarian mark, green circle and then green square. And for non-veg cake, for cake or any cosmetic or any other product you buy, you get the non-veg mark for that. But why not for all these vegetables, food, any kind of food, processed or non-processed, raw, whatever it is? We don't impose certification for chemical farmers. So these are some kind of policy issues for which it's not actually advancing. And it's more of when we do something, it is always said that, okay, what is your data? Where is your data? Can you prove that it is working better? Can you prove that there is more soil microbes in your soil? Who has lab? Who has access to lab? None of us. Mostly common people don't have access to lab.
So how can we produce data for all these things? But they don't come down to farmers' fields to produce data. And then we say that organic farming doesn't work because there is not enough data. So these are few issues I wanted to brought to you. Tyagi ji already told a lot about the policy issues, what government should think about and should do about. And before leaving this space, something which is very dear to my heart. I always say that please adopt a seed because many varieties are vanishing now. If we are 500 farmers present here, if each farmer adopts one particular variety, whatever it may be, banana or say ragi or maybe rice or turmeric, then 500 varieties can be saved. Again, I tell you, no one pays to the farmers for saving the biodiversity. But if you find 700 varieties are saved in government institutions, then they will be getting a lot of money for that, to conserve that. So before we lose our resources, we lose our knowledge. Knowledge heritage is also a huge heritage we are losing very fast. We call it Jana Gyana Sampada. So before they vanish, perish, we have to protect them. So we, in short and simple, I can say that biodiversity, either you protect or perish. So we have to take a promise that, okay, at least one variety in each farmer's field need to be conserved, protected, saved, so that we can hand it over to our posterity. Thank you so much. A lot of challenges we are facing, and we have to grow more stronger and stronger and stronger to put our case in front of the world. Thank you so much. Jai Kisan. Has placed a specific task in front of us, each farmer to protect, preserve at least one variety of seed that would lead to diversity. Now, after hearing to two farmers, we are going to hear a scientist, a veterinarian, Dr. Prakash Bhat, who, though is a veterinarian, has been working with farmers' families for many years, some 7,000 families in 75 villages. And what I need to highlight is that he is not only working with families on farming issues, he is also working with families on non-farm activities. So he has a broader vision of rural development and all that. Now I would like to invite Dr. Prakash Bhat to come and say about what he thinks are the challenges, potentials, or his experience about agroecological farming in India. Dr. Prakash Bhat. He is from Karnataka, Dharwad. ಎಲ್ಲಿ ಮನ ಕಳುಕಿರದು ಎಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿರದು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಿಗೆ ತೊಡಕು ತೋರದಿಹುದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ನೆಲಗಟ್ಟು ಧೂಳೊಡೆಯದಿಹುದು ತಾನ್ ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಗಾಧ ನೆಲೆಯಿಂದ ಸವಿವಾತು ಸಲ್ಲಲಿತ ನಡೆಯಿಂದ ಮುಂಬರುವುದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದಣಿವಿರದ ಸಾಧನೆ ಸಫಲತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತೋಳ ನೀಡಿಹುದು ತಾನ್ ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀನೆಮ್ಮ ಚಿಂತನವನುದ್ಯಮವನು ವಿಶಾಲತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಧನರಹಿತ ಸುಖದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓ ತಂದೆ ನನ್ನ ನಾಡಿದು ಕಣ್ತೆರೆಯಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. I'm a little, unhappy because I have to speak in English. That's what they have told me. I would have been very happy to speak in Kannada, and I would have been more comfortable also, but I have to speak in English. I jocularly say that I have some 5,000 acres of land. In fact, I don't own any land. I am not a farmer. I have worked with nearly now 7,000 families
in more than 50 villages, working in a systems way. So initially what we did was to bring I have worked with the poor people, poor farmers, and landless farmers, as I can call them. You know, even the landless people in the village work on farming, and they give a lot of skill to farming. So landless farmers. Brought them together, that was the first thing that we did. To organize them into different levels of people's organization. And that was organic, I tell you. That was not, we had not thought of any structure beforehand, and we started bringing people together, made them think about their resources, the poor resources they had. Many thought that they had poorer resources than they had. Some thought that their land was useless. They left their land, migrated, and working in some mines and all that. And they came back, joined these sanghas, as we called them. Then slowly we made them start thinking about sustainable, holistic agriculture. So thing that we discussed in detail and showed many farmers who did it to them was, we have 5 natural resources. The human beings themselves, I count them first: land, water, animals, and plants, all the crops. All these are interrelated, and they are all the critical organs of agriculture. Now you see that many farmers, small and big farmers, think that it is not possible to keep animals. But not keeping animals could be dangerous, and it is dangerous. And now I am happy that people in the area where we started it as a tree-based farming system, or an integrated farming system. And it is like a cycle chain, anything can be base. And now I see livestock-based farming system emerging, very, very, versatile farming system. If I can talk about the farming system, we heard about monoculture. When you go to the end of monoculture, when you have only one crop, like say sugarcane or cotton, it is what is called factory farming. Everything comes from outside, and something is grown here, and everything is sold outside the system. And so we, with the community, we thought that we should break this monoculture march. So we should come back a little at least, if not go to the closed system, which is not possible for ordinary farmers. It is like rishis. So we said we will have a semi-closed systems where most of our inputs are produced inside the system, and only those inputs that are absolutely impossible to produce inside, we will bring from outside. So the seeds, the manure, and all these things. And in the area where I was working for producing manure, organic manure, there was a limitation in that there was no biomass available. There were no trees in the farming. So we said we will plant trees. I should tell you, these farmers, some 3,000 farmers, have planted 2 million trees, 20 lakh trees. And they are not just a teak, Nilgiri, no, not for they have planted some of them, but for manure, for fodder, because they are needed. If you want to make livestock rearing, low external input agriculture, then you have to have fodder inside. So we have many fodder trees on the banks, what we call biomass bank around. And we have not cared for the distance, 3 meter, and all that. No. Very, very close planting in 2 rows, zigzag, mode. We planted some 300 to 500 trees per acre. You should believe it. You can come and see our farmers and go back to your place.
So that created a big impact on the farming. And then water is another resource. In a country like India, where we get more than, on an average, get more than 1,000 millimeters of water, rainwater, which amounts to 40 lakh liters of water per acre. And we don't care to stop them from running away. We are doing a criminal wastage of our resource. So they all did lot of stopping of water, farm ponds, bunds, and then the trees themselves, check dams, and all these things by Shramadan. Because we had community organization, we didn't have to spend a lot of money on that. People did Shramadan. A culture of Shramadan came because of the community mobilization. Then more than 100 crore liters of water in these farmers' land saved. And it is miracle, I tell you. I had not expected it. Nobody can expect it. If you see some photos, sometime, if I don't know, I would have loved to show them. It is really, we cannot believe, just saving water for 2 years creates such a difference in the crop, in the biomass produced, in the farming system and everything, and soil creation. So then there is also, when we go to monoculture, we produce something to be sold. Because we see there are 10 crops, which is what we think is the most profitable crop is to be grown. And so we leave all other crops and go to the one crop which gives you the most money. So that is how we have lost fodder. Because we have lost fodder, animal rearing is not profitable, animals are not profitable, and then so many links in the sustainability of agriculture have lost, and we have tried to bring in back, and it is surprising, I should tell you. In 1998, I was with a farmer in the farmer's land, talking to him, and we had created a baseline of the economics of each crop in that village, and we were applying to his field and trying to understand the money that he got in the previous year. 5 acres of land, it was 3,000 rupees or some 4,000 rupees. And we initially thought this was per month. No, it was 3,000 to 4,000 rupees a year. And I was really taken aback. By that time, I had worked for 17 years in the villages, and I didn't know this. And landless laborers were earning more than 20,000 rupees those days. Then we had in the meeting in the evening, I must tell you, and then we told them about it, and the landholders started saying, yes, sir, they are more comfortable, we are in trouble. Then I said, we will remove your trouble. I have a sutra for that. What is that? You give your land to them. Let them be uncomfortable. You be comfortable, go work somewhere and earn money. Then they laughed. So this gave me a clue that there is more than money in agriculture. So one of the questions, I just complete with this, maybe I am coming to the end of my time. One of the questions I always ask my farmers is, how much is 1 kg of jawar? 1 kg ಜೋಳ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. 35 ರೂಪಾಯಿ, 40 ರೂಪಾಯಿ, 35 rupees, 40, 50, whatever is the market price, they used to quote that. Then think. I used to ask them to think. Then we came to the answer that 1 kg jawar is 20 rotis. Family is 1 day's meal. Whether it is 5 rupees or 50 rupees or 500 rupees, which is likely to be so in near future, it will make 20 rotis. Even when there is no price at all to jowar, it will make 20 rotis. So we asked our farmers to grow something that they wanted, at least in 50% of the land. So you have seen that these farmers who grow that what they need, they don't commit suicide, what we call subsistence farming. So they started doing that.
then there were trees, then there was horticulture. I have listed some 15 categories of crops, not considering the varieties, like cereals, pulses, oil seeds, fodder, flowers, fruits, animals, birds, all these things. Spices. So we asked to grow as many categories of crops as possible, and if possible, varieties also should come. So with this, the crop diversity has up to 300%, I should tell you. We have counted. And I have farmers who had migrated in before 98 and now say that we are no more afraid of drought. And that should be the headline in our all newspaper. Small man, he couldn't even send his children to school because he was always migrating. Mallappa is his name. So thank you very much for listening to me. This is what we have done. If you have any questions, I think there is some question and answer session. Thank you. Dr. Bhat has presented a very innovative way of measuring your produce. 1 kg jawar is 20 rotis, and I think so that is how we look at it. We have this question answer session, and I and Ananthoo have mic, so we would be the first one to ask questions, and your chance will come after we are through. Everybody agrees that agroecological farming is very useful, has advantages, etc., etc., and chemical farming has disadvantages. This is also agreed. But they say agroecological farming is very good, but it is not productive enough. The yield is low. Sir and madam, what are your views on this question? That agroecological farming is low yielding, it cannot feed the growing population of the country. We would like to have your views, sir and madam. सभी को नमस्कार। ये सवाल बड़ा ज्वलंत है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए पूरा भोजन दे पाएंगे। तो मैं इसमें इस सवाल का बड़ा सटीक उत्तर ये देना चाहता हूँ कि यदि हम एक फसल को ही हम कन्वर्ज करते हैं ऑर्गेनिक रसायन से ऑर्गेनिक की तरफ, तो कई बार ज़मीन की कंडीशन ठीक नहीं होती है और कुछ उत्पादन गिरता है। लेकिन हमने प्रयोग रूप में जांचा है कि जब हम एक ही खेत में कई फसल लगाते हैं तो उत्पादन मात्रा में भी बढ़ता है और गुणवत्ता में भी बढ़ता है और डाइवर्सिफिकेशन में भी बढ़ता है। तो इसका सॉल्यूशन मोनोक्रॉपिंग में नहीं है, ये डाइवर्सिफिकेशन में इसका सॉल्यूशन है, ये समझने की ज़रूरत है। There are two aspects to it. When we say that you cannot feed the growing population, it's a very perennial question, I can say. Maybe for last, since I started my work, I have been hearing this question. So, like, for example, he has grown 100 bags of rice, and I, as a farmer, have grown 2 bags of rice. If you statistically see 102 bags and divide by 2, does it happen in reality? It doesn't happen. You know, when we divide the wealth, it doesn't happen in this way, statistical way. So growing more doesn't mean that availability of food to everybody. So if the food grain, the production of food crops, whatever may be the crop variety, have increased, whether rice or wheat or vegetables or fruits, it has increased. But why so many people have still going hungry? Why so many people are still malnourished? This is a question to be understood. And the other thing is, when we compare two systems, organic systems and the chemical systems, sometimes we compare wrong things. If generally in chemical systems or conventional system, monoculture is practiced. So it's very easy to calculate, okay, you have invested this much of money on fertilizer, pesticide, seeds, irrigation, labor, everything, and then you get this much of thing,
production. So, but in organic farming, what happens? We grow many things together, which have different types of price tags. They don't cost, same price. Like mooli doesn't cost like the price of mooli is not same to price of gajar, carrot. Price of radish is not same as price of carrot if I am growing together. So many people don't calculate in this way. So that is why it is generally felt that the yield comes down. And the market, if you look at the marketing aspect, where I am selling my product in which way. If I am selling at my doorstep, the okra, lady's finger may cost 5 rupees a kg. And if I sell it in the Panchayat headquarters, maybe 6 rupees. Block headquarters, 8 rupees. If I send it to Bhubaneswar, my capital city, it may be 20 rupees. If it is packed nicely and sold in the supermarket itself, it may cost something more. If it is sent to Delhi, it will cost still more. So in what form you are selling, what kind of crop you are growing, and where you are selling, it matters. So yield doesn't always fall down. There are many different technologies available for that, but during the time of repair, no, it takes time. When you damage the land too much and then try to suddenly come to the same yield level, sometimes it may fall. That's the experience, but I have never experienced because never used any chemicals. I have examples. Just 3 days back, I was with a farmer with 1.5 acres, a little less than 1.5 acres, and he had earned 2.5 lakh rupees the previous year. And he was just quoting. I have the video if anyone want to see. In 1.5 acres, in under rain-fed condition, soil and water conservation and all that. One example I just want to quote before we take a, make a decision about whether it is good or bad. You think of a system, systems approach. There is jowar, there is a family, and there are some cattle. And this is what we call system. Family takes care of jowar, and jowar gives grains to the family. Family takes care of animals, the animal gives milk to the family, and the plowing in the draft also. And jowar gives fodder to the animals, and animals gives manure to. Just now, think this farmer with these 3 enterprises understands that growing cotton, I have nothing against cotton, just as an example, thinks that growing cotton gets him more money. Then he shifts from jowar to cotton. Then there is no fodder, animal rearing is costlier, and then there is no milk, you have to buy milk from outside. There is no grain if you are not growing jowar, you have to buy it from outside. All the extra money that is earned from whatever crop goes to buying these inputs for the system. So only it looks like it is earning more, but actually it doesn't add. And your sustainability, more complex the system, it will be more sustainable. And the risks, that are 3 risks in our society, especially I am talking about small farmers, rains and climate, then pests and diseases, and the market price. All these 3 risks are taken care by crop diversity rather than monocropping and chemical fertilizer. At least small farmers and up to 5-10 acres of land, people should never go for such a high input agriculture. You have heard their experiences, their judgment. I would like to quote from the official Government of India, Indian Council of Agriculture Research reports. They say that there is no scientific data, as Sabarmatee ji was saying, but I am quoting from Government of India, Indian Council of Agriculture Research report of 2016 January. I would be reading in Hindi, but I think so you would be able to follow. This is by Indian Institute of Farming Systems Research based in Modipuram, which has been conducting research
Since 2004, in 20 centers of 16 states of India on comparative of organic and chemical and integrated farming, and its own results reports say 18 फसलों में रासायनिक के बराबर या ज्यादा पैदावार मिली, और वो 18 फसलें कौन सी हैं? बासमती धान, मक्का, मूंग, चना, सोयाबीन, कपास, लहसुन, गोभी, टमाटर। इनमें आईसीआर की अपनी स्टडीज, अपनी रिपोर्ट्स 2016 की, नॉट फ्रॉम टुडे, 2016, they have admitted that these have given better yields than chemical conventional farming. And sir, this is in spite of the fact that they did monocropping experiments. When they did really integrated organic farming experiments in Coimbatore, the income of the farmer increased by 2 times to 7 times. These are ICAR results, official Government of India results. Unfortunate part is when their own research shows this data, they don't listen to their own research. And I come from Haryana, which is in the center of Green Revolution belt, highly chemical use and all those things. Wheat was our most problematic crop. In South India, in Central India, wheat is not a major crop. Organic farming developed in South India, Eastern India, Central India. Wheat was not a product, not a crop on which there was a lot of experience. In Haryana, we started on wheat. Wheat is a major crop from Haryana. We had initially problems. But for last 2-3 years, last 2019 data shows 47% of organic farmers of Haryana had better wheat yield as compared to state average yield for wheat. So this is a misnomer to say that yield declines. Yes, yield declines, as Tyagi ji said, if you are limited to only monocropping. If you are limited to only replacing chemicals, stopping chemicals, and not changing your other agronomical practices. Moment you change your agronomical practices, yield decline will not take place. I would like to, before I invite Ananthoo for his question, I would like to add one more point. There is a perception that it takes so many years for yield to recover. Our experience is, it takes so many years to learn really agroecological farming. Once you have learned agroecological farming, then in very first year, you can get good yields. We have farmers in Haryana who've worked on their own land for 3-4 years, did their trial and error, got good results, got good experience, then leased in land. And in the very first year, they got good results. So for once and all, experience of, as I said, even official experience shows that yield decline is a myth if done properly, understanding the full principles of agroecology and adopted, doing away with monocropping, adopting, as Dr. Bhat was saying, integrated farming approach, then yield increases, profitability, of course, definitely increases. Ananthoo. I have a very basic question. Is organic farming just about not using synthetic chemicals, or is there more to that? This is something that we confront again and again. So I just want 3 experts to be talking about that. क्या जैविक खेती रसायनों का प्रयोग बंद करना मात्र है, या रासायनिक खेती इससे आगे, जैविक खेती इससे आगे बढ़कर कुछ और है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात कही है कि अभी तक हम जब जैविक खेती को बात करते हैं तो केवल ऐसा लगता है जैसे रसायनों को मुक्त करना है, लेकिन मुद्दा इतना नहीं है। हमें पूरी प्रकृति की व्यवस्था में किस प्रकार से कोएग्जिस्टेंस काम करता है, डाइवर्सिफिकेशन काम करता है, एग्रो इकोलॉजी काम करती है और प्रोडक्शन डेंसिटी काम करती है,
उसके लिए एक मैनेजमेंट प्लान है पूरा का पूरा। और सही मायने में यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो रासायनिक खेती में इनपुट बाहर से आती है, इसमें कोई चीज़ बाहर से आती नहीं। ये पूरी तरीके से ज़मीन की उर्वरता पर निर्भर है, वहाँ पर कार्बन कंटेंट और माइक्रोबायोलॉजी अपने आप सस्टेन होती है। तो दोनों के सैद्धांतिक फ़र्क हैं। इसलिए क्योंकि पूरे देश में जो चर्चा हो रही है वो बहुत छोटी चर्चा हो रही है, और जब अब एग्रो इकोलॉजिकल बात कर रहे हैं तो इसमें वर्षामान, तापमान और ऋतुमान तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो किसानों को ये समझना होगा कि राइट टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, प्लांट प्रोपगेशन क्या है। तो पूरी तरीके से एक मैनेजमेंट सिस्टम है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम हर इनपुट से लेकर और प्रोडक्शन और इकोनॉमी तक एनवायरनमेंट के साथ जोड़कर उसको देखते हैं। केवल रसायनों से मुक्त होना रासायनिक खेती नहीं है। ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಂತೆ? ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೆನ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಹುಶಃ. ಈ ನೋಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರನ ತಂದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಆದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಇನ್ಪುಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆವಾಗ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ 2008 ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿಗೆ ₹3 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಮಗೆ ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಗಿಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈತರು ನನಗೆ ಒಂದೇ ₹14 ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದನದಿಂದ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 2 ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಂದು, ಹೊರಗಡೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದು, ಅದು ರೈತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ 3,000 ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000 ಫಾರ್ಮರ್ ಆದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರ ಆದಾಯ ಸರಾಸರಿ 3,000 ಪರ್ ಏಕರಿಂದ 40-50 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗಂತೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You are all happy with Kannada answer, yeah. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Okay, You please speak. I will translate. Okay, thank you. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक विचारधारा होता है. ये ऐसे नहीं कि आप यूरिया बंद करके कंपोस्ट डाल देंगे या जीवामृत डाल देंगे. ये एक सोच होता है. इसे हम जो भी काम कर रहे हैं, हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरनमेंट, how you are contributing to our planet as a whole, and also not for ourselves, also for our coming generations. So sure. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ. ಅದು ಬರೀ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಬೀಜ ಹೊರಗಡೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ನೀರು, ನೆಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರುವ ಕೃಷಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಅಂತ.
how we are using our resources without destroying the base, the foundation of our survival, like land, water, plants, genetic resources, all these things. ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೀಜಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳುಗೆಡವದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತ. And how respectfully we are interacting with each other and with the elements of nature. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಕಡೆಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. We will take questions from the audience. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿ. I'll just give. Hello, my name is Harish. Then why the organic products are expensive than normal products? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮಾ ಮಾಡಿ ಪಹಲೆ and then respond. So Dr. Bhat, maybe you'll have to keep translating. If we go to a remote tribal area where people have been cultivating various kinds of crops traditionally in organic ways, mostly you find the products are very cheap. Very cheap. And if we don't use much of external inputs, it should be cheap. It should not be expensive. Why it is expensive? There are two major reasons. One logic is, if you are buying a healthy product, you also should be paying well to the farmer. And if we are concerned about farmer paying a fair price to the farmer, that is one reason for that. The other reason is certification cost. Certification, whatever may be the form, whether it is PGS or third party certification, whatever it is, if we are selling certified products, I mentioned before during my lecture also, my talk also, when we certify, we have to incur a cost. And shelf life is less, so people have to sell it within a specified time. And if you are selling it outside, that's also still expensive. So they are like niche products, specific products, certified products. So that is included in the price. That is why mostly I feel that organic things are costly, because when we sell at our doorstep, we generally don't charge much. Just at the local price. ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾ? ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅದು ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಗಲೂ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು, ಅದರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದರ ಪಾರಿಸರಿಕ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪಾರಿಸರಿಕ ಕಾಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೆಳೆದಂಥದ್ರದ್ದು ಪರಿಸರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಹಳ ಜನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. One more thing is, supply is still less in the market
That is why the price is little more. ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವು. We can take one more question. ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कीमत को लेकर समस्या है या किसी भी स्तर की जो समस्या आप लोग अभी देख पा रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा करके समझने वाले चैप्टर को बदलकर समझकर करने वाला कर लें. हम यदि सामान को बेचते हैं और हमारी लागत कम है तो हम उसकी कीमत भी कम कर सकते हैं. सर्टिफिकेशन के खर्चे की बात जहाँ तक थी, वो भी मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पीजीएस सर्टिफिकेशन में जिम्मेदारी किसानों को दी है. किसानों को कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है यदि वो उसको सही समझकर जिम्मेदारी लेते हैं. यहाँ समस्या का कारण ये है कि हम हर बात को दूसरों से चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ही ये सारी समस्याएं उभर रही हैं. मेरा आपसे निवेदन है कि बिल्कुल संकोच ना करें, प्रकृति की व्यवस्था को समझें और हर जगह अपने संबंध को समझें. जो कंज्यूमर है वो भी हमारा परिवार का हिस्सा है. जब मेरा खर्चा कम हुआ है तो उससे ज़्यादा क्यों लिया जाए. और जो मूल्य निर्धारण की बात आती है, वो एक शेयर प्राइस पर यदि आ जाती है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म होती हैं. मेरा सबसे यही निवेदन है कि इस पर पूरे चिंतन किया जाए. ये विचारधारा है जो भी बात कही थी, ये सारी विचारधारा बदलेगी तो कार्यक्रम बदलेगा. जी. ನಾನು ಗುರುರಾಜ್ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಲ್ಚರ್ದಿಂದ ಏನು ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಮಷಿನ್ದಿಂದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಷಿನ್ದಿಂದ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾವು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ನಾವು ಒಕ್ಕಲು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಯಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಲಿಕಾರರು ಇರದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೆಸ್ಟ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. So now that they are all used to this monocropping and single crops now suddenly we are now introducing diversity in crop. Is it possible for a farmer to easily take to such things? And he says, we have also lost our skill because we have gone to monoculture. Some of the crops So skills also are lost. Yeah, with the farmers we have also lost the skills of this diversity and so in this situation what can be done is what? थोड़ा सा है, ये सवाल ज़रूर है कि हमको एक फसल लगाने का अभ्यास है और जब हमको अपने खेत में कई फसल लगाना है तो हमें उसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से करना है कि उसका दूरी का नियम क्या है, कितने पौधे लगाए जाएंगे, किस पौधे को किसके साथ लगाया जाएगा, किस मौसम में लगाया जाएगा. तो वो एक पूरा फार्म प्लान है. उसमें कौन से यंत्र का प्रयोग होगा, मुझे कौन यंत्र चलाने के लिए मुझे करना क्या है, पानी मुझे कैसे देना, मतलब सिंचाई कैसे देना है. तो इन सारी चीज़ों को हमें पहले समझने का जो काम है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैनेजमेंट प्लान है. ಇದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ರೈತರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಮೊನೋಕ್ರಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾವು. ಮತ್ತು ಇರಿಗೇಷನ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಬಿಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬೆಳೆಯೋದನ್ನೇ ಬಿಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ರಾಪಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಒಂದು ಭತ್ತ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್, ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಭತ್ತ ಇದೆ. ಈಗ ಭತ್ತದ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ಸಾಕು
then the skill is lost forever. Because that skill is, ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಕಿಲ್, ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಕಲಗಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದು, ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದು, ಒಂದೇ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ than loss of crop. Thank you. It's a very Hello? serious Sir. concern actually. It's a very serious concern, and he recognized this is very important, and it will take some time, and I think this kind of interaction with my friends, other people who are in this field, that will help to. Good evening, sir. I would like to add our Haryana experience. Till 2016 or 2015, Haryana farmers just could not visualize that it could be mixed cropping and all those things were possible. They did not realize both things. They did not realize the desirability of multi-crop mixed farming, etc., or the possibility of it. And our yields were low. We visited Maharashtra, Madhya Pradesh, and when they saw actual fields with multiple crops, mixed cropping, then they were convinced of both the things, that this is possible also and this is required also. Thereafter, they have gone into multiple and mixed cropping. So it's not difficult to relearn this skill. Some amount of relearning is required, but more than that, what is required is being convinced that this is desirable and this is possible. It's a very interesting discussion. We would have liked to continue it for long, but there is a time constraint. We would stop it here. There is a dinner is ready. But before stopping... Sir, once again, last question, sir. Last question. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Sir, I have only one question. Sir, last year, central government introduced three farm laws, then they repeal it. So, whether if they reintroduce those three forms, how they will affect on farmers, whether he is an organic farmer or chemical farmer. Just one thing I know that. I think this would lead to a longish discussion, and we should not get into that terrain right now. But I would like to emphasize one point which, there are many important points which were made by the honorable speakers, but one important point which has been made by more than one speaker is one, that various trends of organic farming should not divide us. We should come together, all farmers following any methods, as long as it is adding to nutritious food and safe environment, and as long as it is empowering the farmers, whether it is organic farming, whether it is natural farming, whether it is any other name, we should not be divisive about it. That is the experience of our honorable speakers, and that is the request they make to all of us, and I think we should adhere to that and take that forward. Thank you very much, sir. Thank you very much, madam, for your excellent presentations. Thank you very much. Let's move to dinner, unless there are some announcements. Before going for dinner, if there are young people in the audience who would like to begin discussing youth and agriculture from tomorrow night itself, we originally thought maybe from tonight you could start talking about it. The session on youth and agriculture on day 3 could be too short, 1.5 hours. But those of you who can plan to stay back and sit and start talking about how to take involvement of youth, that too in the right kind of farming, either they themselves getting into hands-on farming or they supporting the right kind of farming. Please do start planning for it. That's point number 1. Point number 2,